किसी और की है. It goes in something like this. Hmm. मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, Hmm. दर्द तो जिंदगी देती है, right? So if you're living, it's a constant struggle to live, right? Accept it and ठीक है. हाँ So जी. the best way to grow your thinking is question a lot, Yep. question everything, That's and very rare. sometimes That's very question the rare these days, answers. हाँ. Question करना is very rare these days. क्यों? अपने आंसर्स को भी क्वेश्चन करो, दैट वे यू विल Hmm. गेट समथिंग अबाउट इट एज वेल, राइट? कि ये मैंने जो आंसर अभी दिया, ये मैं क्यों दिया, लाइक मैंने वो दूसरा आंसर क्यों नहीं दिया, राइट? Hmm. गोइंग अहेड यू विल आल्सो नो अबाउट योरसेल्फ समथिंग, बट दैट वे यू विल आल्सो मे बी सम टाइम गो अहेड एंड लुक Hmm. एट योर थिंकिंग कि मैं सोचता क्यों हूं ऐसे, राइट? Hmm. सो दैट इज वेयर इफ यू क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, Hmm. तो कई बार ओवर थिंकिंग भी हो जाती है, राइट? सो दैट इज वन अदर प्रॉब्लम, बट या Hmm. sometimes going ahead, if you question, you get to a lot of times understand yourself कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और कहाँ सोच रहा हूँ, राइट? क्योंकि काफी बार what happens with people is कि प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, राइट? चलो प्रोग्रामर स्पेसिफिक बात हाँ कर जी. लेता हूँ थोड़ा सा. यहाँ पे, राइट, हाँ. बहुत सारे प्रोग्रामर कर देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व. पूछो Hmm. ना यार कैसे की, तो वो Hmm. तुम्हें सूडो सा एक्सप्लेन कर देंगे. पूछो कहाँ से आया, कैसे, मतलब क्लिक कैसे हुआ, बोलेंगे यार पता नहीं है, लाइक आ गया, वैसे इंस्पिरेशन आ गया, Hmm. right? So that is like some way of thinking, like how did they approach it? So Hmm. that is something interesting and learnable. हम्म. सही बात है यार. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एज वेल कि आपके आंसर्स भी सही हैं क्या. एट एक लेवल पे ये क्वेश्चन करना बहुत Hmm. इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अपनी ईगो अटैच कर देते, राइट, अपने आंसर के साथ. वही जो आपने प्रोडक्ट वाली बात की थी कि डोंट गेट अटैच्ड टू द कंपनी एंड द आउटकम वाला. आई थिंक द सेम Hmm. कैन बी सेड विद द आंसर्स कि भाई क्योंकि मेरे से आया है आंसर तो ठीक ही Hmm. होगा. गेट रिड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, राइट, क्योंकि ये एक सटल ईगो हाँ. वाले सेंस से बता रहा है कि दिख रही है भाई तेरी ईगो कितनी अटैच्ड है इस आंसर के Hmm. साथ. बट या सो Hmm. जस्ट कमिंग टू सम फाइनल थिंग, शुभम. सो बेसिकली आई वाज वेरी इंटरेस्टेड बाय द पीपल whom you admire very deeply, right? Or let's say some of your Hmm. biggest mentors in life जिनका like आप content या let's say your major influences जिनको आप follow करते होंगे, हाँ. admire करते होंगे. Can you share a specific list? Then we can get to anime after that. Yeah, sure. So one is Nusrat Fateh Ali Khan, right? Hmm. Hmm. I admire him very much, right? Hmm. I I really, whenever I listen, I'm super flat. Apart from it, looking at the lyrics of each and every, कुछ उन्होंने लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे, but looking at the lyrics of the song they have sung, Hmm. right? A lot of times I get to understand a lot of philosophy, Hmm. right? Hmm. कि Hmm. यार अच्छा ये कह रहे हैं जिंदगी के बारे में, right? Hmm. And that is something I internalize. Apart from it, like I like to read this poetry. Apart from it, Steve Jobs की एक वो स्टैनफोर्ड वाली है ना, हाँ have जी. you seen that? यप So हाँ जी, वो तो क्लासिक है. that's that fucking मैं बीच बीच में देख लेता हूँ, मतलब वो जितनी बार देखता हूँ कुछ ना कुछ नया ही समझ आता है, because I grow, and that is like a benchmark, right? So maybe after 6-7 months I see it, then I will like, oh fuck, ये चीज भी थी इसमें, ये कह रहा था, right? ये तो मुझे पता ही नहीं, right? तो eventually as I'm learning more and more, I'm understanding new and new things. So apart from it, I admire Freddie Mercury as well, right? So that guy, the story that he left, right? Apart from it, the legacy he left, right? So that is interesting. And so majorly, these three guys were the top of my mind, right? Whom I admire. So keeps on changing, सही बात है. So because as I even learn things, I keep on exploring, more and more. So these people have really profound like impact on me as a person, right? So Nusrat Saab's, this ghazal, I should say, ghazal nahi hai. So there is a song, I think, Tumhe Gorakh Dhanda. So that gave me, a way to channelize and write poetry. So that is where I started writing, right? So that had a very deep impact, and so yep. So that is one thing that is now inseparable from my life, right? Steve Jobs gave me a perspective कि यार
dots would connect backwards, right? And it does, because we make them connect anyway, right? नहीं भी हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के पेंसिल मार के हम कर देते रहे. सही बात है. So ठीक है, let things happen, go ahead, and just do the best that you can. And one thing he says कि every morning I stand in front of the mirror and I say अगर आज मैं मर जाता, if today I am going to die maybe, would I be satisfied or happy, right? Something like that. So going ahead, that is a big motivator. So that is what I learned. So yep, so that is where he comes in, right? And Freddie Mercury, looking at the life he has lived, right? So majorly the songs he created, right? So he was never bound to a box, right? हाँ जी. Every song he created had something, some USP to it, right? हाँ जी. So that is where I felt कि हाँ यार ये चीज, right? This level of creativity. So yeah, that's stuck. So that is majorly it. जो मेरे अभी दिमाग में ऊपर ऊपर आ रहे हैं, और भी बहुत लोग होंगे, बट अभी यही आ रहा है मेरे दिमाग में. यप. आई थिंक यार डेफिनेटली जिस तरह से आपने बात की कि यार मतलब हम भूल जाते हैं अपनी लिविंग रियलिटी में कि मोर्टालिटी इज रियल फकिंग थिंग, यू विल डाई वन डे. और मैंने ये देखा है कि जो लोग कॉन्शियस है, राइट, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर 5 मिनट्स डेली कि यार मैं एक दिन मर जाऊंगा, आई थिंक फॉर देम गेटिंग बॉक्ड डाउन बाय स्मॉल प्रॉब्लम्स इज नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, राइट? क्योंकि जो लोग, बहुत लोगों को बहुत बड़ी लगती है, राइट, उनके लिए बहुत स्मॉल है बिकॉज दे हैव द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ हु दे आर, राइट? इट्स नॉट दैट we are here to conquer nature, it's just that we are part of nature, and just as everything dies, reproduces, so do we. But as I think Sadhguru also says this कि हमने अपनी माइंड में अपनी कितनी अच्छी स्टोरी बनाई हुई है ना, कि अगर कुछ भी लेफ्ट राइट हो रहा है स्टोरी से तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. I think just to maybe end this on what I understood from your conversation entirely is that I think acceptance and just willfully and smartly cruising your way through life is a very good approach, and just seeing ki kya kya avenues and how I can smartly just balance all thing and accept each and everything, right? And then just maybe live in moderation. So yeah, any final quotes you'd like to have for the audience? Because yeah, anything you'd like to have. या आप अपनी वही सुनाओ यार, शायरी मस्त सी, उस दिन भी सुना रहे थे, एक दो शायरियां सुनाओ. याद करनी पड़ेगी. लाइक ओके, सो दिस इज वन शायरी दैट आई रियली लव. मेरी नहीं है, किसी और की है. इट गोज इन समथिंग लाइक दिस. मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, दर्द तो जिंदगी होती है, राइट? सो इफ यू आर लिविंग, इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल टू लिव, राइट? एक्सेप्ट इट, एंड ठीक है, any way you are gonna die, so live it before you die. ठीक है. Great. तो ये चीज. Great Shubham ji. I think that's a very good way to end. So yeah, like where can we connect with you? Can you give us some social links? Tell us like about your company name. On LinkedIn you can find me by the name of Shubham Bahel, right? Apart from it, you can search The Learning Recipe on LinkedIn as well, and on YouTube as well you can search. I'm about to post a lot of content, but अभी नहीं है कुछ भी वहाँ पे, वो खाली पड़ा हुआ है अभी, right? So yeah. Apart from it, I'm also on Instagram, Shubham Bahel 101, right? ठीक है. Great. Shubham_Bahel 101. Great then Shubham, I think we'll cap this off, and to the guys listening this, so thank you for being with us, and cheers, stay awesome guys.